So as per the 2016 report, 63 million ton of waste is generated annually. 31 million tons of waste is dumped in the landfill site. So it is projected that 2031, we will require nearly 66,000 hectares of land just to dump this waste. If we have a target of diverting waste from landfill, we have to come together across urban local bodies, communities, people, business, and take on this challenge together. One of our big mandates at Godrej Properties is to minimize our waste to landfill footprint. Last year we found that we produced about 17,000 tons of construction waste annually. We looked at it in two parts. On the production of real estate side, we're looking at ways to reduce, recycle and reuse materials. On the life cycle side, we are keen to understand what brings about behavioral change towards responsible waste management. The problem is unscientific method of processing the municipal waste. The SWM, which is Solid Waste Management Rules, talks about the partnership model. Now, what is the role of the ULB, which is the urban local bodies? Their role is to facilitate with MRF and MCC. MRF is where the dry waste is getting sorted, segregated, and from there it is sold off. MCC is where the wet waste is shred and converted into compost. Infrastructure cost, the transportation cost, because it requires door-to-door collection, have to be supported by the ULB. The role of the citizen is that they have to segregate waste at source. Without that, this problem cannot be solved. In order to do that, we mobilized our CSR activities and funds. We worked with our NGO partners, Feedback Foundation. We worked with government agencies on waste management projects in Bhubaneswar and a pilot project in Konark. Konark is a tourist town. The notified area has about 6,000 waste generators, which makes it perfect to run a pilot project. Information, education and communication, or IEC activities have been the basis of getting started. जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हम लोगों ने कोणार्क में की तो बहुत सारी समस्याओं का सामना हम लोगों को करना पड़ा। कूड़ा पहले तो लोग देते नहीं थे, सभी लोग कूड़ा बाहर फेंकते थे। उस कूड़े को हम गाड़ी तक लाने की बात करते थे तो बोले मैं क्यों दूं, मैं तो बाहर फेंकूंगा, मैं खेत का गड्ढा भरूंगा, मेरे पीछे तालाब है, मैं वहां डालूंगा। इसके बाद हम लोगों ने वेस्ट सेग्रीगेशन की बात की कि अगर हम कूड़ा ट्रीटमेंट करें, उसका मैनेजमेंट करते हैं तो उसके लिए जरूरी है कूड़े का सेग्रीगेशन। 4 कैटेगरी में हमने वेस्ट कलेक्शन शुरू किया है: ड्राई, वेट, डोमेस्टिक, बायोमेडिकल एंड डोमेस्टिक हजार्डियस। शुरुआत में मिक्स वेस्ट आया तो उसके लिए हम लोगों ने आईसी के अलग अलग टूल्स अप्लाई किए। फीडबैक फाउंडेशन शायद देश में एक पहला संस्था है जो कि बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन पर काफी एक्सपेरिमेंट किया है। बिहेवियर चेंज करने के जो तौर तरीके हैं उसको कहते हैं ट्रिगर्स। एक तरह का रियलाइजेशन जब लोगों का होता है कि जो कूड़ा हमने बाहर फेंका है वापस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो एक सेल्फ अवेकनिंग होता है उसमें। स्कूल एक ऐसा जगह होता है जहां पे हम एक जगह से ही पूरे शहर में अपना मैसेज दे सकते हैं। बहुत सारी जगह पर ड्राइंग कंपटीशन किए। बच्चों से हमने रिक्वेस्ट किया कि आप पहले अपने आप को चेंज करिए, अपने घर से शुरुआत करिए, फिर हम बाहर कम्युनिटी या अन्य लोगों से बात करेंगे। जब लगा कि लोगों का थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हुआ है तब हम लोगों ने कम्युनिटी के साथ इस बात को रखना चालू किए कि कूड़े को हम ले जाने के बाद क्या करते हैं। तो कम्युनिटी ने कहा कि ये हमारे शहर के लिए है और हर घर से हमें सेग्रीगेटेड वेस्ट मिलना चालू हो गया। जेहेतु एटा गोटे टूरिस्ट प्लेस, पॉलिथिन बोतल ये सबूर पिकनिक स्पॉट जेहेतु बहुत किसी किंतु वर्तमान ये जो आम कार्यक्रम चली कार्यक्रम द्वारा बहुत खुशी अच्छी, बहुत परिवर्तन घटी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में मेन रोल जिनका है जो ग्राउंड के वर्कर हैं तो हम स्वच्छ सैनिक बोलते हैं, और इन लोगों के साथ जो फील्ड में काम करते हैं वो स्वच्छ साथी होते हैं। आमर लोक मैंने ओदा सुखिला अलग अलग दौरान जो मैंने न दौरान बारंबार पाखक जाऊँ, बहुत कथबार्ता कला समस्ते चेंज होती। सुबह 8 से 9 बजे तक गाड़ी आते हैं, वो स्वच्छ साथी आके हमको बताया, इसलिए हम ओदा अलग और सुखिला अलग करके हम फेंक रहे हैं। हमारे पास 21 लाइट कमर्शियल व्हीकल एंड 12 बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल है। सेग्रीगेटेड वेस्ट हमारा जो एमसीसी पे आता है, यहाँ पे उसको अनलोड किया जाता है, ड्राई को ड्राई के प्लेटफॉर्म पे एंड वेट को वेट के प्लेटफॉर्म पे। उसका सेकेंडरी सेग्रीगेशन किया जाता है, उसमें बैक्टीरिया कल्चर मिक्स करते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो है उसको मेंटेन करने के लिए कोकोपीट यूज करते हैं।
उसके बाद उसको श्रेड करते हैं, तो उसकी वेइंग करते हैं, फिर हम उसको पिट में डालते हैं। टोटल साइकिल कंपोस्ट बनने की 60 डेज की है। हम उसका सीविंग करते हैं, उसका पैकेजिंग करते हैं, उसको स्टॉक करते हैं, उसको सेल करते हैं। In the Indian cities, 50% comes as dry waste. 12 to 15% is recyclable. रिसाइक्लेबल मटेरियल को हम अलग कर लेते हैं। जो MRF है हमारा, वहाँ पे 12 बिन बने हुए हैं। तो उसके वॉल्यूम को कम करने के लिए हम लोग को बेल करते हैं। 100 to 110 kg की एक पेटी तैयार होती है। एक महीने में हम इसको सेल करते हैं। हम लगभग 85 to 90% वेस्ट को मैनेज कर लेते हैं। Earlier, after collection, they are dumping in a secondary point, then they are shifting it to the dumping yard. But now, our door-to-door collection vehicle shift it to our processing unit, that is oil centers. Government of Odisha always says it's not waste, it's a wealth. So that's why in MCC and MRF we call it as a wealth center. BMC's vision is will process every waste in this MCC and MRF centers. 67 वार्ड है हमारा इधर भुवनेश्वर में। हम लोग अच्छे करेंगे तो हमको देख के वो अपने अपने उनको बोलेंगे भैया उन लोग का हमारा बाजू में चेंज हुआ, हम लोग चेंज नहीं होंगे। This initiative by BMC in my ward is a very good model of solid waste management. This only will be possible when waste is segregated and processed in a very environmental friendly way. मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम सक्सेस हो गए हैं। The vehicle will reach here from 7 to 7:50. Ceremoniously they are observing it. अगर हमारा कलेक्शन मैकेनिज्म उनके दरवाजे तक सही टाइम पे पहुंचता है तो लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं। The city has to be divided into clusters. For every 50 to 60,000 population, you require 1 acre of land. And in that 1 acre of land, you will have MCC MRF of capacity 20 tons per day. The decentralized waste management system is a manpower intensive model. It's a wonderful opportunity where rag picker, which is the informal sector, could be converted into a formal sector. ମୁଁ କାମ କରୁଛି ଏଠି ବର୍ଷେ ପରେ ହେଲାଣି। ମୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଥିଲା। SI କାର୍ଡ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୋର ଦେହ ଭଲ ଥିଲା। ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠି ନେଲା ପରେ ମୋତେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ଚାକିରି କରୁଛି। The monthly operational cost is roughly around 12 to 15 lakhs. 20% of it is currently being met by revenue. The compost sale as well as the sale of the dry waste. There's a big gap. That gap has to be taken care by the user fee collection. They have to pay the user charge for this service. कोणार्क उड़ीसा का पहला शहर है जहां पे हम लोगों ने यूजर चार्ज स्टार्ट किया है। 80% of operating cost is being met from the user charge and the sale of recyclables. We have envisioned that every MRF MCCs will have a small park and the community is using it. We reuse the parking bays as the badminton courts, as the play areas. So this is how you're giving back that piece of land to the community. We know all the metrics of one unit, very easy to scale up. If in Konark we were able to divert 1,471 tons from landfill, in Bhubaneswar the same thing translates to 8,646 tons. Happy to state that from the pilot to its scale, we now have operational projects across the country, from Batala, Agra to Budni. CSR टीम हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम लोग को प्रोवाइड करती है। वेरी हैप्पी कि गॉडरेज का सपोर्ट हमको मिला है। We were able to offset 1/3 of our waste footprint away from landfill. We are also very keen to share this information with our peers to be able to impact the industry at the larger level and hopefully bring about a positive change towards responsible waste management.